The detail about experimental research was given by Sir Robert Session Woodworth in his book, which was named as Experimental Psychology, and this book was written in 1938. So what are some of the features of experimental research? Number one, experimental research determine causality. Remember, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कॉज और इफेक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं. इसी वजह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्ट्रॉन्गर है इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉज ऑफ एनी introduced or manipulated variable. The second is, in experimental research, we observed the effect on dependent variable by manipulating independent variable. DV stands for dependent variable and IV stands for independent variable. तो experimental research में हम क्या करते हैं कि our purpose is to find the effect on dependent variable. कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करें, अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने से दूसरा जो वेरिएबल है which is the dependent variable, so how it is affecting. So we can say that there is an effect of independent variable on the dependent variable. Remember, in experimental research we have to provide a controlled environment. So we control all variables which may affect our dependent variable, and we only allow the independent variable to be changed. इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और इसके अलावा जितने भी बाकी वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन वेरिएबल्स को कंट्रोल करें ताकि सिर्फ और सिर्फ हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट फाइंड हो सके. एग्जाम्पल है इफेक्ट ऑफ वीडियो फिल्म्स ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन. So this is an experimental research topic in which our aim is to find what is the impact of or what is the effect of watching video films on acquiring of language or language acquisition. तो इसमें हमारे पास watching of video films is the independent variable क्योंकि ये पहले आ रहा है, और language acquisition उसकी वजह से develop होगी, इसीलिए language acquisition is dependent variable. So in conclusion we can say that experimental research has causality factor, which means that we can determine cause and effect from experimental research, and there are different variables involved in which we control all other variables, but we only manipulate the independent variable and see its effect on the dependent variable.